क्रिकेट सफारी में आप सब लोगों का स्वागत है भाई। यहाँ पे तीक्ष्णा साहब ने क्या गेंदबाजी करी है, पढ़ ही नहीं पाए, गलत लाइन पहल गए वहां पे। वो ही नहीं थे, मतलब पूरी की पूरी अगर आप दुबई कैपिटल्स की बल्लेबाजी देखें, समझ में नहीं आया किस किस्म की बल्लेबाजी हुई, लेकिन गेंदबाजी की तारीफ तो करनी ही पड़ेगी क्योंकि सिर्फ तीक्ष्णा साहब नहीं थे। तीक्ष्णा साहब गए, उसके बाद डैनियल सैम्स आए, उससे पहले उनके स्कॉटलैंड के जो भाई स्पिन गेंदबाज हैं, उन्होंने क्या 4 ओवर का स्पेल डाला है, सेटअप किया है वहां पे। एंड ऑल इन ऑल आप कह सकते हैं एक बेहतरीन प्रदर्शन आज देखने को मिला है। दूसरी लगातार जीत शारजा वॉरियर्स की शारजा क्रिकेट ग्राउंड पर 9 विकेट से मात दी यहाँ पे डेविड वार्नर के दुबई कैपिटल्स को। लेकिन इससे पहले की भाई चर्चा हो, थोड़ा जल्दी नहीं हो गया? मतलब 1.5 घंटे लगे, 1 घंटा 45 मिनट हमें लगे आने में। यहाँ पे जनरली 40 मिनट की जर्नी होती है। कवरअप हुआ है, बड़ा सॉलिड कवरअप हुआ है यहाँ पे। क्या कवरअप किया शारजा वॉरियर्स ने। हमारे साथ ऑफ कोर्स शो पर मौजूद हैं अंजुम चोपड़ा, अजय मेहरा एंड ऑल्सो ऑफ द शारजा वॉरियर्स निरोशन डिकवेला। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। इससे पहले मैं डिस्क्लेमर दे दूं, उनको हिंदी समझ में आती है थोड़ी थोड़ी सबटाइटल वाली। सर ने बोला है वो सबटाइटल देंगे आपको वहां पे। बट निरोशन, कंग्रेचुलेशंस। व्हाट इज द वर्ड? सैटिस्फाइंग a day like this in the office? Very much. First of all, I want to thank my God for this outing. It was a brilliant outing for the team and for me. This is our back-to-back game. So we played yesterday and it was a bit tough, getting to this second game. No crowd today on a Monday, and I think we started really well and ended up really well. What's more satisfying for you? Because of course you went out there, you batted really well, you got that 30 odd or a strike rate of about 130, 140, but that catch of David Warner as a wicket keeper, is that the most satisfying for you when you pull off something like that? Of course it is satisfying, for mainly winning a game is most satisfying. And of course those chances as a wicket keeper you have to take the chances, and as a fielding unit we've been really good up to our standards till now in the tournament. I think we take these chances and we are in a good run. But at least we can reshare it on Instagram, right? That catch again and again and again on a reel, put some nice music on it, give it a nice feel to it. Yeah, of course you are always doing that with always doing that. Yeah, that's the only currency we have, social currency. Ajay bhai, Anjum of course is joining us. Ajay bhai, kya good day in the office यहाँ पे पूरी की पूरी टीम के लिए दूसरी लगातार दिन पे आए। बिल्कुल, जिस डिकवेलर ने कहा ना, वो जो कैच था बड़ा अहम था, क्योंकि वो डेविड वार्नर का कैच ऐसा लग रहा था थोड़ा धीरे धीरे अपनी लय पकड़ रहे हैं, पर वो जो टाइमिंग ऑफ द जंप रहता है, और जैसे डिकवेलर ने कहा कि अहम चीज है कि मैच जीतना, पर मुझे लगता है वो जो कैच है उसने भी पूरा मैच बदल दिया। क्योंकि अगर डेविड वार्नर चलते और वो बने रहते क्रीज में कुछ भी हो सकता था, पर ये बहुत ही शानदार, क्योंकि वो टाइमिंग ऑफ द जंप की हम बात कर रहे हैं। फिर कई बार क्या होता है, जब कोहनी नीचे लगती है ना, गेंद आपके हाथ से निकल जाती है, व्हेन द एल्बो हिट्स द ग्राउंड, समटाइम्स द बॉल जस्ट प्रोपेल्स आउट ऑफ द हैंड। मुझे लगता है वहां पे कंट्रोल करना वो बड़ा अच्छा था। Yeah, that was basically English to Hindi subtitles to back to English subtitles. For you, basically what he's saying is when the elbow hits the ground, are you sometimes a little, the ball can just pop out like that. Yeah, can happen. It happens. This is just cricket, Things happen, but when you are so confident and when you are winning games and you are doing well, so these catches I just stick in your gloves. So have to always prepared for the ball for you to come. I mean, as a wicket keeper, I always expect the ball to come to me. Yeah. So that's what I always do in these 20 overs. अंजुम, ग्रेट डे इन द ऑफिस। मैं तो कह रहा हूँ पूरी की पूरी टीम के लिए आपने पहले 105 पे आउट किया, उसके बाद आराम से आपने चेस किया, ये नहीं कि ये टाइम लगाया, आया बॉल तो जी मारो बाउंड्री से। नहीं, चेस तो बहुत बढ़िया था, बट एक चीज डेफिनेटली देखने की ये है कि बैक टू बैक मैचेस खेलने के बाद जीतना क्रेडिटेबल है, बिकॉज अभी तक इस टूर्नामेंट में बैक टू बैक मुझे नहीं लगता कि किसी भी टीम ने मैच जीता है। माइट बी 10% इनकरेक्ट, बट वैसे आई थिंक आई एम करेक्ट 90%। हाँ, इसलिए मैं जरा इनकरेक्ट पहले बोल दिया थोड़ा। तो बैक टू बैक मैचेस जीतना आई डोंट थिंक इस टूर्नामेंट में अभी तक हुआ है। सो क्रेडिट टू योर टीम, बट हाउ व्हेन यू हैव कम अप अगेंस्ट अ दुबई कैपिटल्स काइंड ऑफ अ बैटिंग लाइनअप, I'm sure from yesterday's bowling performance to today's bowling performance, there must have been very limited time to turn things around. But how difficult or easy was it for your team? So just we as a team, we want to do the basics first. Hitting the off stump, top of off, and hit the right lanes, and just get what we could get from the new ball, and just do the basics first. And then if they are going against our bowlers, then do the different things, come up with the variations and with the different feel. So as a bowling unit, we are well prepared. We had all our team meetings, and everyone's prepared and they know what to do. So they executed really well today.
You were not opening the batting initially in the first couple of games for the Sharjah Warriors, but when you came in today, from yesterday we saw a lot of more aggression. Aggression was there yesterday as well, but today was more aggression, more movement, backing across, hitting the ball in the offside, and very controlled strokes on the onside. How did you plan that innings? You know, as a coaching staff, all the coaches and the management back every player. So they want, John Botha just give us an example of a boxing game. If you step back, they're going to punch us hard. Yeah. So then, as cricketers, we go for that same rule. So if he's bowling hard, we're going to go for it. We're going to punch them back. That's the mentality we have in our team. What was the chatter with your Sri Lankan teammate Theekshana? Brilliant day in the office. No one was being able to read him at all over there in the middle. Yeah, I know. With this carom, when the ball is gripping, it's very hard to play for those carom balls. And sometimes he bowls this googly, but googly everyone can read it. Yeah. So I told him when I was keeping, just bowl the carom so no one can read today. So just not to give much runs because you're bowling. He was like 3 for 11 in 3 overs. I said, don't give much runs. Yeah. Don't try to get 5 wickets. Just bowl good areas. If it's there, you will get those 5 wickets. अजय भाई ये देखिए कहाँ उन्होंने गेंदबाजी करी है बिल्कुल। तीक्ष्णा साहब। और इसमें अर्जुन जो लेंथ है ना बड़ी महत्वपूर्ण रहती है। अगर आप देखें जो 4 से 6 मीटर के बीच में जो लेंथ है वहां पे 66% ने गेंदबाजी करी है। और जैसे कहा कि जैसे मिशन वो करते हैं, विविधता दिखाते हैं, तभी उनमें वो क्लास नजर आती है। और सबसे बड़ी चीज तीक्ष्णा की ये है कि स्टंप लाइन पे गेंदबाजी करते हैं। अगर आप देखें ज्यादा दिशा से भटकते नहीं है। जब स्टंप लाइन में आप गेंदबाजी करेंगे, बल्लेबाज पढ़ नहीं पा रहा, फिर बल्लेबाज के लिए मुश्किलें हैं। लेग फोर प्ले में आता है, कई बार बोल्ड होते हैं, तो ये उनकी ताकत है। आई थिंक तीक्ष्णा, वी जस्ट मेंशनिंग अबाउट हिम डिक्वेला, that always bowling the stump line, and that's his big asset as well. No, Hindi to English. Hindi to English. Yeah. You don't need a subtitle. No. Yeah. So that's the thing. That's his strength. Yeah. Bowl in stump lines, and if wicket does something, there will be a little bit of turn. So then batsman can't really just miss the ball, hit the stumps or pads. But you also thought there was something on the surface for the spinners early on in the first half of the game? Yeah, of course, because second game on this wicket. Yesterday also we played in the same wicket. We knew there was going to be some grip, and later on it will be good because of the dew. Yeah. So same thing happened, and our bowlers executed really well from the start. That's the main thing. We could kept them under 110. Absolutely. Roshan, how many variations does he have? Because you have probably the best seat in the house. You see him very closely. Most batsmen can't read it. You tell us then. Actually, because everyone else is listening. Yeah, actually he has 5 variations. I don't want to mention everything. Five variations, as I know. And when the ball is quite new, he goes for the in swing and he can bowl the out swing as well. So that's 2, and these 3, googly and the off spin and the carom. मैं जी हमने बात सबकी कर ली है यहाँ पे, लेकिन इससे पहले जो सेटअप किया था वो 4 ओवर का स्पेल, जो उनके स्कॉटलैंड के जो गेंदबाज थे, 4 ओवर डाला फिर चले गए बाहर, लेकिन उनका बहुत बड़ा योगदान था सेटअप करने के लिए। था जरूर, क्योंकि कल भी उन्होंने बॉलिंग करी थी। कल पहला मैच था, आज सेकंड मैच था, लेकिन एक चीज थी जो मार्क वॉट की गेंदबाजी में दिखी थी कि वो कल जो बॉलिंग कर रहे थे वो क्विक कर रहे थे, आज जो कर रहे थे वो फास्ट कर रहे थे। तो ये उनकी वेरिएशन थी। हम तीक्ष्णा की वेरिएशंस की बात कर रहे थे। मार्क वॉट आल्सो हैज अ लॉट ऑफ वेरिएशंस, लॉट ऑफ क्विकर डिलीवरीज टू बोल, एंड इनफैक्ट द अपॉर्चुनिटी टू बोल इन द पावर प्ले। टिल नाउ तीक्ष्णा अभी तक गेंदबाजी कर रहे थे पावर प्ले के अंदर, एंड पहले अगर क्रिस वोक शुरू करते थे तो सेकंड ओवर डालते थे तीक्ष्णा, लेकिन पिछले दोनों मैचेस से तीक्ष्णा पावर प्ले के बाद आ रहे हैं और मार्क वॉट गेंदबाजी कर रहे हैं। ये भी एक और स्ट्रैटेजी है। As a wicketkeeper, as a batter, how easy or difficult it is to pick Theekshana? I played with him quite a lot of times, and so I know his variations. And sometimes I ask him what he's going to bowl with the field. He changes the field, and then I'm asking what are you going to bowl, and sometimes I give advice because I don't want him to leak runs. So then we coordinate with each other. With Mark, he's a very accurate bowler. He has this in swinger and the out swinger. He's very controlled in that. So and he can turn the ball as well. Yeah. So and it's really hard for me to pick what than my Theekshana. Why is that? Because of the quickness of the and he holds the seam. Yeah. And he comes to the seam and he bowls the in swinger and the out swinger in the same action. I have one final question before we move on to a fun segment with you. You say you keep on chatting with Mahisha Theekshana, of course. Does he always listen to you, to your advice? He has to listen to me.
Always. There you go. Okay, we've got a little fun rapid fire before we let you go. You've been a beautiful sport. So I'm going to ask you questions quick and fast. What's your favorite holiday destination? I think I know this, but please tell us. Your favorite holiday? You tell me. If you're from Sri Lanka, it has to be Sri Lanka. Come on. No. That's the No, most no, you beautiful don't. destination No, ever. No. Never. Beep. No. Caribbean Islands. Okay. Beautiful. Favorite cheat meal? McDonald's. Okay. Oh, really? Yes. Okay. What do you do when you're not playing cricket? Hang out with my friends back home. Mm-hmm. That's like chilling with my friends. And which teammate of yours could be a movie star? Here or Sri Lanka? Anywhere. Oh, Danushka Guntilaka. Okay. Who would play you in your biopic? If there was a biopic made on you, who do you suppose would play you? As in, I didn't get the question. Which actor would play you if a film was made on you? Oh, I would. I know you watch a lot of Bollywood films, so I mean. Bollywood. Maybe Danush in the Tamil movie. Yeah. Danush. Good actor, Yeah. very good I actor. like Danush. Okay, this one you got to be modest with us. Don't be that modest. Actually, your best quality. Oh. Being friendly with everyone. We can see that, sir. Thank you so much for that. Oh, this one now. Your worst quality. Quality. Yeah. Not going to bed on time. Oh, what's it? 2 a.m. Maybe late. 4. No, not that much. In Three. between. Your biggest fear? Snakes. Snakes. Oh, okay. Cricketing idol. Kumar Sangakkar. Okay. And your final question. This is your biggest bawal moment of life. Craziest moment in a nice way. Bawal, in that sense. In cricket, when I keep wickets, I love to sledge to batsmen, and then if I sledge and then they get out, it'll be my bawal moment. Could you tell us a moment when it happened actually? Johnny Bairstow in Sri Lanka when we played the test match. Yeah. And Virat Kohli got out once. Yeah. And he paid the return back to me. Oh. Yeah. Mr. Kohli always does that. Yeah. He never carries a baggage back. Finally, those are- before we let you go, I know you love Bollywood music. You like listening to it. Is there a song you'd like to sing for us, for all the people watching back at home? I can't sing. First of all, I can't Okay, sing. your favorite song then, before we let you go. Oh, Something that you're playing on loop all the time. Hindi. I like this. It's Teri Gutti, Teri Mitti. Mitti? Teri Mitti. Yeah. There are a couple of songs on that. We'll find the rest. Yeah, please. We'll find it in the break. Narosham, thank you so much for being a lovely sport. Lovely performance for you and the entire team. Congratulations once Thank you. again. Thank you It's so time much. for भाई नहीं it's time मैं अंग्रेजी में क्यों बोल रहा हूँ भाई छोटा सा ब्रेक है ब्रेक के बाद उस दिन फिर से मिलते हैं आइए मतलब मैच जल्दी खत्म हो गया इसका मतलब ये नहीं कि हमारा शो जल्दी खत्म होगा दोस्त हमारी तो बातचीत बने रहेगी क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन हो गई है अंजुन चोपड़ा चले गई हैं रीमा मल्होत्रा आ गई हैं यहाँ पे अजय मेहरा तो है ही हमारे साथ रीमा गुड टू सी यू ऑन द शो इतनी जल्दी मतलब इतना नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी निपट गई दुबई कैपिटल की टीम देखिए शारजा एक तैयारी से आई थी और अपने घर पे खेल रही है कल जीत के आई थी वो जीत का कॉन्फिडेंस आज की उस गेम में नजर आ रहा था और ये एक अच्छी टीम की पहचान होती है कि आप एक मैच जीते हैं लेकिन जब वो चीज आप दोहराते ना तो कंसिस्टेंटी वर्ड आपके साथ जुड़ जाता है अगर कंसिस्टेंट टीम आप बन गए तो समझिए आपके बारे में आ रही है इस चक्कर में आप टेबल में काफी ऊपर भी आए हैं बिल्कुल मैं तो मोमेंटम की बात कर रहा हूँ जी ये सही टाइम पे आप मोमेंटम पिक करते हैं ना ऐसे टूर्नामेंट में और अगर आपने लय पकड़ के फिर आपने जी सुपरमैन की तरह जंप मारी पहुंच गए जी प्ले ऑफ में एब्सोल्युटली और ऐसे जीत से क्या होता है अर्जुन आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है जैसे गेंदबाजी की बात करते हैं डिक्वेला भी हमसे चर्चा कर रहे थे तीक्ष्णा हो मार्क वॉट हो जैसे उन्हें गेंदबाजी किया डैनियल सैम्स आए जैसे उनका योगदान रहा और फिर बल्लेबाजी में क्योंकि ज्यादा लक्ष्य था नहीं बड़ा पर फिर भी वो शुरुआत बड़ी अहम रहती है क्योंकि ऐसे लक्ष्य में क्या होता है 2-3 विकेट खो दे ना तो ऑपोजिशन को लगता है कहीं ना कहीं जिया ये विकेट में कुछ हो रहा है कुछ हरकत हो रही है हम वापस आ सकते हैं पर वो जो स्टार दिया डिक्वेला ने और जैसे बल्लेबाजी चार्ल्स ने की कोई मौका दिया ही नहीं सर वो एक बंदा जिसका बल्ला नहीं चला उसका नाम बता दो एक बारी डेविड वार्नर ये चर्चा कर करके थक गए हम 77वीं बार आज उनका नाम लिया गया देखिए जी साफ सी बात है डेविड वार्नर का बल्ला चले ना चले वो दूसरी बात है लेकिन भाई साहब के लिए प्यार भारत में अलग लेवल पे है Why are you such a popular man in India? I think popularity comes with embracing culture, having the respect, the gratitude, and when you get to travel to different parts of the world,
India just stands out for me with the whole experience. There is the perfect reason why it's called Incredible India, because it is amazing. The people, they're so welcoming. You know, they've always got a smile on their faces no matter what. The food is outstanding. The hospitality in general is unbelievable. During COVID, you know, it was a sad time for everyone, and doing some dances on Reels and TikTok and stuff, you know, I felt like that was a way to connect people and to put smiles on people's faces. And I think popularity probably grew a lot more through there. But as I say, you have to embrace culture, you have to respect culture, and that's one thing I've always done from a young age. Yeah, Pushpa, it's something that I watched, and a lot of people were calling me Pushpa for some reason, so I learned to do the action, and from there it was just took off, and it was a big hit. But no, when you go and field on the outfield, people start yelling out to you, know, so you want to give them something, then the DJ plays the music. They're here to watch the game, but they're also here to watch people entertain, and you know, if my small part of entertainment is giving the crowd what they want and have a little dance, then I'll do that. ये ठीक है वार्नर साहब, आप बताओ। हाँ 10 किलो मेकअप निकल गया ये करते हुए, बट भाई साहब अलग लेवल पे हैं। उनका सोशल मीडिया जो गेम है भाई मजेदार है। फिलहाल मजेदार तो पॉइंट्स टेबल लग रहा होगा। शारजा वॉरियर्स को 5 मुकाबले खेले हैं और 3 जीत अब उनके नाम आ चुकी है भाई। 6 अंक पे आ चुकी है शारजा वॉरियर्स की टीम, दूसरे पायदान पर आ चुकी है, एंड एवरीवन इन अ सेंस इज कैचिंग अप टू माई एमिरेट्स। अगला मुकाबला इनका माई एमिरेट्स के साथ ही है। तगड़ी टीम है, टूर्नामेंट में लह पकड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर शारजा वॉरियर्स की हम बात करें भाई, व्हाट इज दैट की, दैट इंपॉर्टेंट थिंग, जब अब उनकी सफलता की बात करें, हमने उनसे बातचीत करी और उन्होंने ये बताया। I think from our staff, it's quite a young staff. You know, JP as the batting coach, Westy as assistant coach and fielding coach, and I'm obviously still pretty young. And then TK is a young captain. So I think from that side of things, it's sort of a fresh start. And then I think with our playing group, it's almost a little bit older, some of them. So there's a lot of experience in the group with the young guys. So I think we've got a good mix. You can't micromanage, you know, everything and want to be involved in everything. You know, as the head coach, you don't want to sort of be everywhere across the board. And Westy was with the team last year, so I think it was good to get a coach who was in the system last year, you know, with that experience. And then myself and JP as the 2 new guys. Well, I'll be spending time with the bowlers. Obviously, as a former spinner, I really enjoy spin, and I enjoy playing spin in my team. But, you know, we have to still play the conditions. We can't just load it with spinners, and there's a lot of dew around, and it doesn't work for us. So we've got to be smart with that. And yeah, that's sort of what I'll bring to the table. And then you've got some experienced bowlers. You know, we'll lean heavily on Chris Wokes. You know, Daniel Sams has now played a lot of cricket. Madhu Shankar was excellent in the World Cup. So we've got seamers to, you know, help out, take the lead. And, you know, us as a staff, we certainly don't think we know it all. And we're going to lean on our senior players to help us out as the tournament goes. अजय भाई, वो कप्तान साहब के बारे में बातचीत कर रहे थे। आज कप्तानी भी जबरदस्त हुई है। अर्जुन, इतनी बढ़िया जीत, देखिए कप्तान की अब तारीफ करनी बनती है। टीके से की अगर आप बात करें, मुझे लगता है बॉलिंग चेंजेस आज बड़े जबरदस्त नजर आए हैं। मार्क वॉट को शुरू में वो उसकी सोच थी कि 2 ओवर कराएं, पर 4 ओवर लगातार कराए क्योंकि दबाव डाल रहे थे। और बॉलिंग चेंजेस आप देखें, वो दबाव डाल रहे थे, तीक्ष्णा को लेके आए। तो मुझे लगता है यहाँ पे कप्तान की दाद देनी पड़ेगी। बड़ी जीत मिले शारजा वॉरियर्स को, कप्तान की तारीफ बनती है। 12.5 सेकंड में बिल्कुल क्या जी 100 मीटर रेस लगा दी आपने यहाँ पे। जीत हो गई, स्वीट जीत होगी, जीत होगी, गोल्ड मेडल आ गया। वैसे गोल्ड मेडल कल कौन लाएगा भाई? 2 टीम आमने सामने होंगी, ILTP वर्ल्ड ILT20 सीजन 2 के एक और ये मुकाबले में। एक तरफ है भाई डेजर्ट वॉरियर्स, हसरंगा साहब हैं, पूरी की पूरी ऑफ कोर्स पाकिस्तान की बॉलिंग कंटिंजेंट है, और सामने है ये टीम। ओए होए 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 होए, कौन पकड़ेगा माई एमिरेट्स को? वाइपर्स वर्सेस माई एमिरेट्स, ये है कल का आपका मुकाबला NDP वर्ल्ड ILT20 सीजन 2। रीमा, अजय भाई, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। जाने से पहले आपको लग रहा है कि जी ये जो लय चल रही है माई एमिरेट्स की,
देखिए, जब छोटे फॉर्मेट में आप लय जल्दी पकड़ते हैं ना तो आपके पास कॉन्फिडेंस आता है, आपके पास मोटिवेशन होता है और इस समय आप टेबल टॉपर हैं तो बेखौफ खेलिए, अपनी फॉर्म के साथ खेलिए क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ मैच विनर्स ज्यादा हैं, इन फॉर्म प्लेयर्स ज्यादा हैं। दुबई में है सर मुकाबला। पर मुझे लगता है देखिए मोहम्मद वसीम जैसे बल्लेबाजी की अबू धाबी में कमाल की बल्लेबाजी, कुशल परेरा उनको नहीं भूल सकते, निकलस पूरन, मतलब उनका टॉप ऑर्डर देखे ना फॉर्म में है, ये अहम चीज है। टॉप 3-4 अगर फॉर्म में है तो ये टीम कुछ भी कर सकती है। उनकी गेंदबाजी साथ में ट्रेंट बोल्ट अगर आप देखिए फारूकी जैसे गेंदबाजी कर रहे हैं तो मुझे लगता है माई एमिरेट्स के साथ वो लय है, उनके साथ मोमेंटम नजर आ रहा है, पर मैच टक्कर वाला होने वाला है अर्जुन। तगड़ा मुकाबला होने वाला है। हम कहीं नहीं जा रहे, यहाँ पे अभी और बातचीत होने वाली है। वैसे आप देखिए दिस इज दैट इंपॉर्टेंट फेज ऑफ द टूर्नामेंट। आपको दिख रहा है कि एक टीम है वो जी रफ्तार पकड़ चुकी है, अब सब उसके पीछे पड़ रहे हैं कि आप पीछे पकड़ो, माई एमिरेट्स को पकड़ो चाहे कुछ भी हो जाए। और यही वो मूवमेंट होता है जहां पे आपको एक एक्स्ट्रा पुश चाहिए होता है, आपको लड़ाई लड़नी होती है टेबल टॉप में आने के लिए, 4 टीमों में आने के लिए। और यहाँ पे शारजाह वॉरियर्स ने जिस तरह से वापसी की है, बाकी टीम भी मुझे लगता है उसी तरह से अब टक्कर देंगी, मुकाबला लड़ेंगी क्योंकि जानते हैं कि और थोड़ी देर हो गई ना तो टूर्नामेंट से बाहर होते हुए देर लगेगी नहीं, इसीलिए ये वो समय है जब अपनी गेयर बदल लीजिए। शाहीन शाह अफरीदी, अरे वाह, उनको देख के मजा आया था। विकेट टेकर है और उनके पास हमेशा वो जिम्मेदारी रहती है ना कि विकेट्स ले जरूर में, और मुझे लगता है उनके पास जो गति है, जिस अंदाज में गेंदबाजी करते हैं, तो एक बड़ा जबरदस्त गेंदबाज है, उन पे नजर रहेंगी कल भी। सर आप ये बताओ, हमने क्यों आपको 12.5 सेकंड्स दिए वहां पे कि आप जी कोच साहब की वहां पे तारीफ करो, मतलब कप्तानी की तारीफ करो? हम तो जी हमारी तो कथा चली जा रही है, यहाँ पे चली जा रही है। बिल्कुल, पता नहीं आपने क्यों कम दे दिया हमें। अर्जुन से प्रश्न करना पड़ेगा। रुक जाते हैं, यही रुक जाते, थोड़ी और करते रहते हैं। हाँ, करते रहते हैं, बिल्कुल मजा आ रहा है, बिल्कुल मजा आ रहा है। चले तो जी हम करते रहेंगे यहाँ पे, लेकिन आजम खान, उन्होंने कैडमिल की तारीफ की है, तो मैं आजम खान की करना चाहती हूं। आजम खान जिस तरीके का वो प्लेयर है, जिस तरीके की उन्होंने पिछली पारी खेली थी, अगर रन आउट ना होते तो मैच उन्होंने बना दिया था। क्रिकेटिंग शॉट्स खेली थी, हम सोचते हैं कि वो ताकत का खिलाड़ी है, लेकिन यहाँ पे देखिए वो सेंसिबल बैटिंग नजर आती है, वो स्किल नजर आती है जो एक अच्छे खिलाड़ी की पहचान होती है। मैच उन्होंने बना दिया था। और रीमा, ताकत भी है, नजाकत भी है। ये ताकत भी लगाते हैं, गैप में भी खेलते हैं, नजाकत से भी खेलते हैं। वो जो कट शॉट्स खेलते हैं ना, देख के बड़ा मजा आता है। तो ये ऐसे खिलाड़ी जिनमें नजरें रहेंगी कल। आप शाहीन शाह अफरीदी की बात करते हैं, आजम खान को नहीं भूल सकते आप। हाँ, यू कांट मिस हिम सर। जब तक ये नहीं बोलते ना शो भी पूरा नहीं होता, तारीफ भी पूरी नहीं होती। अब हो गया जी, बिल्कुल हो गया, कर दे बंद। बिल्कुल बिल्कुल। लाइटें बंद होने वाली है, हमें जाने का बुलावा टाइम आ गया जी। फिलहाल कल मिलेंगे। ऑफ कोर्स दुबई में है मुकाबला, माई एमिरेट्स वर्सेस डेजर्ट वाइपर्स। जाने से पहले ऑफ कोर्स आपको फिर से बोल दें कि भाई होप एवरीवन इज सेफ, एवरीवन इज गुड एंड एंजॉय योर टाइम विद योर फैमिली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कल मिलेंगे सेम टाइम। गुड बाय। सी यू।